वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक की कंटिन्यूटी में आज हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज में लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेस लेक्चर, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लिक्विडिटी रेशियो एंड इट्स टाइप, फार्मूला एंड कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो एंड वैल्यू रेशियो। लास्ट लेक्चर के अंदर हम इन 5 टाइप आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी रेशियो क्या चीज है, पीपल कैलकुलेट करते हैं और ये टाइप लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट टू नो हाउ कंफर्टेबल अ कंपनी इज पे इट्स डेट्स इन शॉर्ट टर्म। कि कंपनी कितना इजीली कितना कंफर्टेबल वैसे अपनी करंट शॉर्ट टर्म डेट्स पे कर सकती है, अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने की कितनी कैपेबिलिटी रखती है, कितने परसेंटेज कैपेबिलिटी। टाइप्स ऑफ रेशियोज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। लास्ट वर्किंग कैपिटल के बारे में हम डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो। करंट रेशियो के अंदर करंट रेशियो का जो बेसिक फॉर्मूला है, current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Current assets and current liabilities आपको बैलेंस शीट से मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेगी। और assets and current liabilities की डेफिनेशन हम इनिशियल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जस्ट उसकी रिवीजन। current assets means resources consumed or converted into cash within 1 year is known as current assets. Current liabilities, obligations or responsibilities that will be paid within 1 year is known as current liability. It will check the short-term liquidity of the company. Short-term liquidity को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन का, उसका नाम है करंट रेशियो। आर्टिफिशियल पर्सन मीन बिजनेस। If current ratio is greater than 1, it means current assets are greater than current liabilities. अगर आपके पास करंट रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा है तो इट मींस कि लायबिलिटीज आपकी कम है, करंट लायबिलिटीज कम है, करंट एसेट्स आपके ज्यादा है। इफ करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मींस कंपनी कैन पे शॉर्ट टर्म लोन इजीली। अगर आपके पास करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 1 से ज्यादा है या 1 है, इट मींस कि कंपनी इजीली अपना शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर सकती है। इफ करंट रेशियो is less than 1, it means company need to finance long-term loan in order to pay off current liabilities. अगर आपके पास करंट रेशियो 1 से कम है, less than 1 है, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेकर अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा। जिस तरीके से नेचुरल मेडिकल टेस्ट के अंदर हर टेस्ट की कोई सर्टेन परसेंट रेंज होती है, इसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो टेस्ट है करंट रेशियो, इसका भी टेस्ट, इससे भी एक परसेंटेज गिवन है। करंट रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। बट हेल्दी रेशियो इज 1.33। बेहतर है कि 1.33 हो, अगर 1.33 से कम है तो मार्क्स फिर भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इट मींस कि ये इसकी हेल्थ नॉर्मल है। अगर 1 से लेस देन 1 है, इट मींस कि उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ, उस आर्टिफिशियल पर्सन की हेल्थ जो है वो वीक है, तो उसके अंदर कुछ डिफिशियंसीज है। नेक्स्ट रेशियो है क्विक रेशियो, जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला जो है क्विक रेशियो डिवाइड इज इक्वल टू क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट एसिड्स। अब लास्ट टाइम करंट एसिड्स तो थे, अब करंट एसिड्स से क्विक एसिड्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्विक एसिड्स इज नथिंग ऑल करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Resources consumed or converted within 1 year normally except inventory is called quick assets. Current liabilities वही है जो liabilities within 1 year पे करनी है। It indicates the quick ability of a firm how to meet its current obligation, falling due quickly on demand. अगर कि आपके liabilities से, आपके vendor से, आपके creditor से अगर urgent demand आ जाती है liabilities को पे करने के लिए, तो अगर आपका क्विक रेशियो बेहतर होगा। क्विक रेशियो आपसे ये इंडिकेट करता है कि आप कितना जल्दी उसको पे कर सकते हैं।
is greater than 1, sorry, quick ratio is less than 1, company need to finance long term loan to pay pay off current liabilities. अगर आपके पास क्विक रेशियो लेस देन 1 है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज लोन लेने के करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होगा. अगर क्विक रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इट मींस कंपनी कैन पे शॉर्ट टर्म लोन इजीली. नेक्स्ट है आपके पास क्विक कैश रेशियो. कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. फर्स्ट में करंट एसेट्स थे, सेकंड में क्विक एसेट्स थे, अब लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स किसको कहते हैं? जो an asset that can easily be convertible into cash in a short amount of time. Minimum time में within a few seconds, few minutes के अंदर. Liquid assets include things like cash, money market, instrument, price bond, marketable securities, जो easily cash या cash की currency use हो सके. This is called liquid assets. Current liabilities, कोई obligations paid within 1 year. The cash ratio is the most conservative. That's because it compares only cash and liquid assets. बहुत ही ज्यादा most conservative रेशियो है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेस करता है आपके कैश के ऊपर. Cash ratio is less than 1. Company has shortage of the cash to pay its current liabilities. अगर कैश रेशियो आपका 1 से ज्यादा है, इट मींस कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्दी है और आपके कहीं पे शायद एसेट्स की लीकेज भी है जिस वजह से ओवर एसेट्स है, उसकी एसेट्स की कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है जिस वजह से आपकी पास रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 है. इतने एसेट्स, इतना कैश इन कैश इक्विवेलेंसी है कि जितना आप लायबिलिटी थे उससे भी ज्यादा है. करंट लायबिलिटी से भी ज्यादा अगर आपके पास कैश बना हुआ है तो इट मींस कि आपके पास शायद प्रॉपर यूजेज, प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ कैश नहीं है शायद. अब लास्ट रेशियो है, लास्ट सिंपल डेफिनेशन है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कहते हैं जो कैपिटल आपके बिजनेस की वर्किंग में काम आए. कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट रेशियो क्या था? करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स तो इज converted in 1 year. Working capital is used for day-to-day business operation. It is comprised of inventories, bill receivable, prepayments, markets, securities, cash and bank. जो भी चीज आपके पास डे टू डे यूज के सेल की, परचेज की, कैश आया, कैश दिया, इस टाइप की जो भी छोटे छोटे एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के लिए जो आपके पास एसेट्स से लायबिलिटीज यूज हो रही है दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. कि कितना वर्किंग कैपिटल है आपके पास, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज. This is all about liquidity ratios. Thank you for watching. If you have any confusion, questions, you can write